So we will start with this presentation, and just to give you some background, some color on what we have been doing at InVed. So we actually published a very detailed report on the power T&D sector about a couple of months back, and we got a phenomenal response from a lot of good investors. Due to this report, we were able also to connect with good investors. So we thought that we should really circulate this content, which could be helpful for retail as well as HNI, as well as some family offices where we work. And that is why we decided that we should really put out this content in public for everyone's use. Hence, we have decided to keep posting such sessions, keep doing sub sessions in the interest of everyone. And I think this is very simple and easy to understand sector, but somehow a lot of people are not able to fully understand what's happening or don't have a clue of what's happening. I hope I'm okay with English, or do you want me to, kind of speak in Hindi? Whatever works for everyone. Well, I think whichever way you are comfortable, Hindi, English, both mix is okay. Perfect. Perfect. Cool. So we'll try to mix it. Isko, I'll try to kind of mix both. So really, just to before we start, just to give you some background of what's been happening. If someone has closely tracked this sector, really large outcomes have already happened in power T&D sector. Kuch companies have really scaled up their top line, bottom line, fundamental numbers, as well as share prices. Share prices have followed, but in some cases, share prices have also, reacted before the fundamental numbers had come. So, for example, one of my favorite companies, which is transformer rectifiers in India, Trill, it has gone up. If you look at 23 share price, and if you look now, there is a significant run up and again a correction. Some other companies like Silchar, some power T&D EPC companies, some other component companies like Quality Power, or even some wire and cable companies like Dynamic Cables, Universal Cable, Power Industries. So if you look at these names, everything has run up and also now has corrected. But this session is basically to make you guys understand that why it happened. Now, obviously, the sector run up is, gone, but you can always understand, and you can always, learn from your mistakes, or, from the market, and apply those learnings in newer sectors or the same sector when again the revival happens. So जो सेशन है उसका पूरा थीसिस ये है कि इसको एकदम ग्राउंड अप समझें, and if you are able to fairly understand what is the landscape, and overall big picture kya hai, then you will obviously be understand this, you will be able to understand the small picture or the micro level, company level understanding. So today's session we will be only covering the macros, which will form a base for the upcoming micros. So in today's session, we will only discuss about what has the government done, about what are the plans, and in plans ki wajah se, what are some interesting themes which have emerged, and what are some investable ideas for the future. Obviously, as disclaimer, this is education platform. We are not here to recommend anything. If you feel something is right, consult your financial advisor. Any profit or loss which you make due to some education is not our responsibility. But the entire purpose is ki to become more educated about the sector and about these companies and what's happening in the sector. So I'll
hopefully just deep dive in the PPT. But in the meanwhile, I think if audio, video, everything is perfect, just give us a thumbs up or something, so that we can start and really enter the main part of it. Cool. Awesome. Thanks, Piyush, Mohit, Amit. Thank you. Um, so yeah, moving on to what's been happening. And as I told you, in this session, we will only be covering the macro level data. But in the next sessions, and we plan to do this probably every weekend or alternative weekends, is to just discuss about a sector for 2-3 weeks, and then probably take a month's break or a few weeks break and move on to a next sector. This is how we are planning to structure this. And today we are talking about the overall power T&D space. uh, Now you can guess from the name itself that power T&D is basically divided into transmission and distribution. So it is a combination of transmission, which is transmission का मतलब होता है large distance evacuation of power, which means आपको power या electricity भेजनी है, let's say from Gujarat to West Bengal. And गुजरात में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि one of the largest solar parks in India, Khavda, is probably the largest solar park in the world also. They are doing large scale transmission projects. बहुत बड़ा transmission का capex हो रहा है, and they are sending electricity from Gujarat to all the different parts of the nation. And this is interesting fact that India में जहां power generate होती है जिन states में, और जहां consume होती है वो अलग states हैं. सबसे ज्यादा generation renewables, solar और wind का is happening either in Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, even Karnataka, but consumption happens, let's say, in Maharashtra, right? Or in North India, in Delhi, NCR region. Those are the consumption hotspots. और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को आपको जनरेशन वाले सेंटर्स से कंजम्पशन वाले सेंटर्स में ट्रैवल कराना है, एंड इसलिए ये ट्रांसमिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का. सो फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसमिशन. एंड जो इंट्रा सिटी पावर का इवैक्यूएशन है, या पावर को भेजते हैं हम घरों में फ्रॉम सिटी लेवल सब स्टेशन टू होम्स, हाउस होल्ड्स, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. सो दिस इज ब्रॉडली कॉम्बिनेशन ऑफ जो लार्ज डिस्टेंसेस पावर ट्रैवलिंग फ्रॉम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, टू हाउस होल्ड्स तक ये जो बिजली आ रही है थ्रू सब स्टेशन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज द ओवरऑल, दिस इज व्हाट द T&D word means, transmission and distribution. So broadly, आज की presentation will be about an hour long thing, and it will be divided into 4 broad areas. First is just a basic introduction. Then we will actually deep dive into the value chain कि distribution और transmission में खर्चा हो रहा है, मतलब खर्चा कहाँ जा रहा है, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जिनमें अब खर्चा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा हो रहा है. Then we will actually look at government's data. So government हर साल में एक डेटा रिलीज करती है जिसको बोलते हैं NEP, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान. उस प्लान के हिसाब से गवर्नमेंट खुद क्या बोल रही है कि हम कितना खर्चा करेंगे और कहां कहां करेंगे. That data will actually drive bulk of the investment thesis in this sector. क्योंकि उस डेटा को अगर आप बहुत क्लोजली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कहां पे ज्यादा खर्चा करने वाली है. और क्योंकि गवर्नमेंट का वहां पे ज्यादा खर्चा है, तो जो कंपनीज उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगहों पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उन कंपनीज के सेल्स ग्रोथ ज्यादा आने वाले हैं. So this all data will triangulate, will basically, you will be able to understand the government capex, which will actually translate to revenues, sales, margins, profitability of a lot of listed unlisted companies. एंड देन लास्टली हम देखेंगे कि ये मार्केट कितना बड़ा है, साल में कितना 1000 करोड़ का ट्रांसफार्मर का डिमांड है, या लेट्स से केबल्स का डिमांड है, या इन जनरल पावर T&D का कितना कितना क्या क्या सेक्टर्स में डिमांड है. सो दिस इज हाउ दिस सेशन विल बी स्ट्रक्चर्ड. एंड अगेन,
if you have the understanding of the basics, then it will be very easy to understand the next steps or probable investment ideas, or not just investment ideas, probable companies who will benefit from this trend. I hope I am clear. If someone has any questions, feel free to kind of post it on the chat. We will anyway take it maybe a little later, but you can post it anyways. So I'll move on. So pehla, really the basics of power transmission is just the meaning of the word, which is transmission and distribution. I think I've already told you this, but I'll repeat. ट्रांसमिशन का मतलब होता है बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे पावर को ले जाना, लेट्स से फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, एंड फॉर दैट यू नीड हाई वोल्टेज ट्रांसपोर्टेशन, राइट? आपने हो सकता है कि कभी देखा हो, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट यस और नो, बट आपने हो सकता है कि कभी देखा हो कि बहुत बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, और उन टावर्स पे बहुत वायरिंग, लाइक इट्स अ मल्टीपल स्टोरी टावर, and it's a pretty large tower which has multiple layers of wires going through it. आपने कभी देखा है वो? Yes, yes, great. That is a high voltage transmission. तो ट्रांसमिशन उसको बोलते हैं जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. एंड ऑन द अदर साइड, अगर आपने अपने घर के बाहर जो पोल्स लगे होते हैं, वो कितना छोटा होता है, राइट? वो इट्स वेरी स्मॉल इन साइज. द अमाउंट ऑफ पावर इट इज ट्रेवलिंग इज वेरी लेस. सो इन टर्म्स ऑफ केवी अगर आप पावर बोलो, तो जो ट्रांसमिशन होती है वो इट इज ऑलवेज अबव, लेट्स से 44 और 110 केवी. इट गोज अप टू नाउ डेज 1100 केवीज. वाइल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखोगे तो अपने घर के बाहर लिटरली जो मैनी ऑफ योर होम्स आपने देखा होगा कि जो छोटे पोल्स होते हैं, और ये फोटो में भी यहाँ पे देर इज इट इज देयर ऑन द इमेज एज वेल, दैट ट्रांसमिशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स टावर्स and distribution are smaller poles, right? Poles, bipoles, which carry very small thin wires relatively to the transmission, and they carry 1.1 kV or maybe 10 kVs of electricity. So that is a basic differentiation. Absolutely, absolutely, Ajay Singh and Deda Badri, you are right. So this is a very broad introduction of the sector. Transmission जो बड़े towers में जाता है, distribution is on the city level distribution thing. So moving on, to really ये जो गवर्नमेंट का केपेक्स हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? तो आपको रियली ये समझना पड़ेगा कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इंडिया नीड्स, द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, और उस स्पेस से जो हमारे जनरेशन के सोर्सेज हैं वो ग्रो नहीं हो रहे थे अप टिल 5 years बैक. तो एक नॉर्मल थर्मल प्लांट को आने में करीब 5 से 10 साल का कंस्ट्रक्शन का पीरियड होता है, वर्सेस डिमांड वाज राइजिंग ईयर ओवर ईयर. सो उस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फोकस करा सोलर एनर्जी पे, एंड यू वुड नो अ लॉट ऑफ दीस सोलर स्टॉक्स व्हिच हैव डन वेल. बट if renewables have to come in a big way, and why did renewables come? Because they were very low cost versus the traditional thermal energies of the world. Because you wanted to expand and intake power from renewables, you will have to do this capex. Similarly, जैसे मैंने आपको बताया कि खावड़ा से वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ा HVDC लाइन, एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का लाइन, government is planning and already in implementation stage to integrate renewables with your main existing grid. आपको ये ट्रांसमिशन का खर्चा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. और आपको अगर दूर दराज के एरियो तक, in remote parts of the country, if you want to take power to long distances, you will have to set up transmission and distribution lines. There is no other way, right? Also, a lot of this transmission expenditure is happening in very specialty equipments, like there is something called HVDC, which is used for grid stability. होता क्या है कि a lot of this renewable power, or incrementally all the 80-90% of the installations are on the renewable side.
अब रिन्यूएबल पावर को if you really want to use it, the problem of using renewable power is it is not round the clock, which is called RTC. Solar is mainly solar is mainly available during the daytime, and in the night time it goes off all of a sudden, right? Which was not the case with thermal. And hence इसकी वजह से दिन में एकदम से पावर अवेलेबिलिटी या सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, बट रात में सप्लाई कम हो जाती है. और इस वेरिएशन की वजह से, विच इज लार्जली कॉज्ड बाय रेन्यूएबल्स, there is a lot of instability of grid, and due to this mismatch of demand and supply, now this is about supply only, but on the demand side what's happening is demand is uh, सुबह के टाइम पे demand is higher, but in the daytime demand is lean, but in the night time again demand goes higher when everyone is back home. You turn on your lights, ACs, TVs, all the household equipments, demand goes off the roof, but solar is turned off. And due to this anomaly of non-availability of renewables for round the clock, you need certain special transmission capex, which is going to be done in a lot of these equipments, which will enable grid stability and reliability. And accordingly, I mean, just extending the same point, you will have to manage loads of power, which is balance your supply as well as your demand, and hence all of this will need transmission capex. So this is why largely this transmission capex is done by the government of India. If you really want to grow as a country, अगर देश जो है इंडिया इसको ग्रो होना है at let's say 7-8%, 9% GDP growth rate and nominal growth rates of north of 10%, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इस देश की हर साल 5 से 10% ग्रोथ होगी, और उस डिमांड को फिलफिल करने के लिए आपको ट्रांसमिशन में केपेक्स करना पड़ेगा, नॉट जस्ट इन जनरेशन में तो आप केपेक्स करोगे ही, क्योंकि आपको डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई करना है, बट सप्लाई डिमांड तक पहुंचेगा ही नहीं अगर आप ट्रांसमिशन में केपेक्स नहीं करोगे. तो थिंक इट लाइक जो पुराने जमाने के फोन होते थे, आप दोनों तरफ रिसीवर चाहिए, लेकिन बीच में अगर जो वायर होता है या एक पाइपलाइन होती है जिसके थ्रू वो कनेक्ट होता है, ट्रांसमिशन वही चीज है, जनरेशन और कंजम्पशन को कनेक्ट करता है. और अगर आपने जनरेशन में खर्चा कर दिया और आपकी डिमांड भी है, सप्लाई भी है, बट आप इन दोनों को मैच नहीं कर पाओगे जब तक आप ट्रांसमिशन में खर्चा नहीं करोगे. एंड हेंस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रीजंस ऑफ व्हाई ट्रांसमिशन केपेक्स इज नीडेड फॉर द कंट्री. I hope I'm clear. Any questions? Happy to sort of answer. But I hope till now it is clear. Kushal, I think you should go with the flow, and queries we can take in the last. Cool. Awesome. So moving on to the next, this was a very basic introduction of what's been happening in the इसका मतलब क्या होता है basically power, T&D sector, transmission and distribution. And now we will actually delve deeper into what is actually in transmission and distribution. So अगर आप वैसे logically सोचोगे तो power generate होती है, which is the first step which is there in this slide. To you take it in high kV or high voltage transmission lines, which are those large towers which I mentioned. Then these transmission lines will typically take this power to substations. So why are substations used? In a substation, typically you will either lever up the kV or you will step it down. So step up या step down जो होता है power में, let's say जो generation होता है, it happens at 11 kV, but you cannot travel the electricity at 11 kV. आपको जो traveling करानी है अगर interstate की, तो you will have to make it to 765 kV, 440 kV on even आजकल तो 1100 kV के गवर्नमेंट के प्लान्स आ गए हैं. तो आप जनरेशन के टाइम पे ही आपको एक सबस्टेशन लगता है. जनरेशन में 11 kV जनरेट होता है, उसके बाद यू हैव टू स्टेप अप द इलेक्ट्रिसिटी. तो 11 kV से आप उसको स्टेप अप करते हो यूजिंग अ पावर ट्रांसफॉर्मर. उसको स्टेप अप कर दिया, उसके बाद
you make it travel in higher kV voltage lines, higher kV, transmission lines. Then that suppose has traveled to somewhere in the middle, or let's say to the end जहां पर आपको travel कराना था. Then there is some other substation which will step it down. Again, it will step it down from 440 or 765 kV to a lower, kV. And then that transmission substation goes on to a another substation which is a distribution substation. तो ट्रांसमिशन सबस्टेशन में सारा का सारा इक्विपमेंट हायर केवी होता है, सब कुछ, एंड हायर केवी इज स्लाइटली मोर टेक्निकल versus lower kV. So it basically, I hope I'm clear that the generation happens, then it goes through your electricity wires which are high kV, then it goes through substations, and substations are of 3-4 types. The substation will change, the kV will change, or let's say higher voltage will become medium voltage will become low voltage, and finally आपके घर के बाहर या आपकी कॉलोनी में जो, और your locality, they will have a distribution substation जहां से you had started from 765 kV, but आपके घर पे जो लाइन आ रही है which is called service drop, और एक लाइन जो इंडस्ट्री या कमर्शियल कस्टमर के जहां जा रही है, that will be, let's say, a 1 kV or a 11 kV line, and that will actually be a part of a distribution network. So this is how the entire value chain works, right from generation to the end customers. There are various steps in between, and each step has its own nuances. Each step is very useful for stepping up or stepping down of electricity. There are various cables which are used, there are various towers structures which are installed, there are various substations which are installed. Substations mein there is a plethora of equipments which are installed. If you just Google an image of a substation, there are more than 100 or maybe 500 types of equipments which are used in a substation. And substation bhi do teen tarah ke hote hain. And finally the power comes to our home. So it is not an easy process as it looks. If you really go down the path of understanding, it is a fairly complex as well as capital intensive sector, जहां पे ये सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है ताकि बिजली आपके घर तक पहुंचे. इसीलिए जो जनरेशन की जो कॉस्ट होती है, अगर आपने सुनी होगी कि आजकल सोलर के पीपीए साइन हो रहे हैं 3 रुपए पे, 2.5 रुपए पे, लेकिन अपने घर पे जो बिजली आती है एंड द यूनिट प्राइस विच वी आर चार्ज्ड इज सिग्निफिकेंटली हायर, राइट? इट इज हायर बिकॉज जो इसका डिफरेंस है वो सारा इज इन्वेस्टेड in this T&D sector by the government of India. And obviously it has some margins for the players which are in between, but largely bulk of the capex also happens in the T&D sector. So I hope this is again I'll move on to the next slide, which basically mentions what are some of the equipments or components used in this entire travel of electricity which happens from generation to final delivery of power. And really the first point is generation, where a thermal plant or a solar plant or let's say a wind plant will be generating, and some of the key sub equipments or components, let's say अगर कोई solar plant है तो उसमें solar के panels होंगे, let's say कोई wind है तो उसमें turbines होंगे, कोई hydro electricity बना रहा है तो again hydro turbines, or if someone is making, let's say, electricity through thermal, तो thermal का तो पूरा the entire sub station hota hai thermal ka, where they use gas and use turbines to generate electricity. Then that will travel to higher kV transmission lines, जो आप सोच पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा टावर होता है जिसमें ideally you will place conductors. Now conductors कुछ अलग चीज होती है versus cables. Just a broader in a one line, conductor are bare aluminium wires which are, or they can be even copper wires, but basically इनकी capacity ज्यादा होती है
और ये बेयर होते हैं ऑलमोस्ट हर बार, मतलब बेयर मींस इफ यू टच यू विल गेट द करंट, वर्सेस जो केबल्स होती हैं, स्पेशली जो हाउसिंग केबल जिनसे शायद आपने कभी देखी होगी हाउसिंग केबल्स, तो मोस्ट ऑफ दैट केबल हैज अ लेयर ऑफ एक्सएलपी और पीवीसी केबल्स होती हैं जिनके ऊपर अंदर की तरफ कंडक्टर होता है या वो मेटल होता है, लेकिन बाहर की तरफ देयर इज अ कोटिंग ऑफ पीवीसी और एक्सएलपी। सो इन हायर वोल्टेज ज्यादातर कंडक्टर्स होते हैं, और ये कंडक्टर्स बहुत they are very vast and they can basically support or help the electricity to travel at a very higher kV versus cables. अगेन ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कंडक्टर्स के थ्रू अपने अगले स्टॉप पे जाती है, विच इज ट्रांसमिशन सबस्टेशन। ट्रांसमिशन सबस्टेशंस में अगेन पावर विल बी ईदर स्टेप अप और स्टेप डाउन एज इट इज रिटन इन पॉइंट 3. There are certain switch gears, bus bar, isolators, and protection relays. If you have typically seen a photo of a substation or तो आपको वहां दिखेगा कि there are a lot of equipments apart from a transformer, and these equipments will actually be there on the next slides, but I'll anyway explain here. And apart from that, there are certain equipments which measure the electricity, जहाँ पे मेजरमेंट होता है कि कितनी बिजली जो है वो केवीज में या उसका जो देर आर वेरियस मेजर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. A lot of these measures are measured, and there are protection relays. कभी कोई हायर केवी इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो प्रोटेक्शन रिले उसको शट डाउन कर देता है सिस्टम को. सो ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम्स में. देन द फोर्थ पॉइंट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज बल्क रीजनल नेटवर्क डिवाइसेस. ये कुछ ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो रिन्यूएबल पावर को मेन ग्रिड के साथ जोड़ते हैं, और इनमें कुछ एचवीडीसी और फैक्ट्स से रिलेटेड कुछ डिवाइसेस आते हैं. ये एक बहुत ही यूनिक नए तरह के डिवाइसेस आजकल यूज हो रहे हैं क्योंकि रिन्यूएबल पावर भी काफी नई है. सो ये डिवाइसेस कोशिश करते हैं कि रिन्यूएबल पावर की फ्रीक्वेंसी और वेव्स थोड़ी अलग होती हैं वर्सेस द नॉर्मल ग्रिड. And these fact devices, which is flexible alternative current transmission devices, and HVDC, which is called high voltage direct current converters, इन डिवाइसेस को यूज करके आप रिन्यूएबल पावर को you can use that and make it equivalent or similar to the grid's adaptability. मतलब जो ग्रिड में जो पावर यूज होती है वर्सेस जो रिन्यूएबल पावर होती है वो कुछ कुछ जगहों पे डिफरेंट होती है, और उस वजह से ये डिवाइसेस की आजकल बहुत डिमांड है. और these are one of the high growth areas which we are seeing. Similarly, again, substations तीन चार तरह के होते हैं. तो 0.5 is again a substation, but this time ये एक छोटा substation है. And mostly in this substation, there is a step down of electricity which is happening, and they are again transmitting it to future or the next transmission or regional substations. Again, the transmission regional substations will transition this electricity, which is a high voltage HV electricity, to medium voltage electricity. And hence, this again will have to be stepped down. तो अभी जो 440 और 765 kV electricity will be stepped down to 33 kV or 110 kV. And similar to previous substations, यहाँ पे भी switch gear होंगे, protection relays होंगे, bus bars and isolators होंगे. This will again go to distribution network where the cables which now will be used will not be conductors, they will be cables, and hence these will be medium voltage or low voltage cables which will be used, and hence finally the electricity will actually come at your home or at an office or at a factory, which will be a much lower medium voltage or a low voltage electricity which will finally be coming. So this is how the electricity travels, and these are some of the important, equipments, components which are used when we sort of use when we travel, when we make the electricity travel from generation to consumption point. So I think we'll move on to the next. So this broadly can be actually categorized in three major buckets.
आपने जो पास्ट में जो पूरा वैल्यू चेन देखा है, विच इज जनरेशन टू कंजम्पशन, this is basically categorized into three major buckets. One is towers, जहां पे ये टावर्स में जो केबल कंडक्टर्स लगते हैं, तो टावर्स में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है. Second is substation. Substation is actually one of the most heavier parts. So in terms of distribution, and this is something which will come in the next slide also. But substation actually, is in terms of costing. अगर 100 रुपए लग रहा है in the entire value chain, roughly 50 to 60 rupees are invested in a substation. And the remainder is actually spent on a tower and a cable and conductor. So towers, substation, cable, conductor, these are broad three areas where this entire T&D expense will happen. And hence this is what we have kind of explained here. Again, moving to towers, there are, you can see different types of towers, right from your poles, which are here at your nearby your homes or offices, to, really large tower structures, which can actually be multi-story tower structures, and they can go as high as 50 meters above the ground, which is a very high, structure. And you will see different components, different ancillary things which are used in towers versus poles, and we'll get to it, I think, more on the next week. But अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस टावर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एंड based on a type, they have the capability to handle electricity of different kVs. Similarly, in substations, there are various equipments. As I told you, there can be potentially more than 100 to 500 equipments which are used, but these are some of the major, equipments which are used. Like सबसे major equipment तो एक transformer ही होता है, which is used in a substation. But then apart from transformers, you would potentially see, bushings as well, which is यहाँ पे surge arrestor करके लिखा हुआ है, बट बुशिंग्स आर ऑल्सो यूज्ड. एंड हर एक इक्विपमेंट का एक यूनिक यूज केस है. तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, केवी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है. सर्किट ब्रेकर और इंसुलेटर और अ सर्ज अरेस्टर बेसिकली टेक्स केयर दैट पावर डजंट कम मोर देन द डिफाइंड केवी. सो लेट्स से अगर आपका पावर ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी 400 केवी यूज करने की है, it can take an input of, let's say, 400 kV. But if for some reason the power has come more than 400 kV, surge arrestor will surge or take down that. एकदम से जो अपन बोलते हैं ना कि सर्किट लग जाता है घर में, कभी कभी पावर एक सर्टेन लेवल के ऊपर आ जाती है, तो सर्किट लग जाता है, एंड द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी गोज इज स्विच्ड ऑफ. सो इनमें से कुछ कुछ इक्विपमेंट्स का वही काम है, जैसे इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर एंड सर्ज अरेस्टर. दे हैव द सेम वर्क बट फॉर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ पावर. पावर में सिर्फ केवी नहीं होता, देर आर सम अदर क्वालिटीज ऑल्सो, जहां पे ये सब इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू मैनेज दैट, and to really function in whatever format or whatever the capacity is of that substation. So these all equipments actually help to basically function properly. And अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो वो लोअर केवी हैंडल करेगा. अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है तो, एंड अगर वो ट्रांसमिशन सबस्टेशन है, then it will actually be handling a higher kV. And these are all different products which are used, and it's a long list of products, but these are just on sample basis, some of the products. This is how things work in a substation. There is a primary side, as well as a secondary side. Ideally, the power comes from primary side, it's inputted in the substation, and there are various instrument transformers, circuit breakers, power transformers, isolators. There are various technical things here, but basically on a broader level, if I tell you कि इसमें हो क्या रहा है, तो एक तरफ से पावर एंटर हो रही है, वो एंटर्ड पावर का आप केवी ऑल्टर कर रहे हो, उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहे हो. यू आर trying to make sure that the power quality
is in line with the grid's power quality, क्योंकि power में there are some other things also apart from kV. जैसे there are various filters which are used to maintain the quality of the power, and using a lot of things, finally that power evacuates or is getting out, of the entire substation. Again, the third point, which was a major expenditure on T&D, was cables. First was towers, second was substations, and third was cables. And I can add here conductors as well. And you would see various different types of cables and conductors. यहाँ पे cables पे focus किया है, तो cables are low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage, different types of cables. जैसा मैंने आपको बताया कि power का different kV होता है, and to handle that either on a transmission level or on a distribution level, these cables or these voltages are used for cables. So this is again a very broad picture, and you also have realization for different extra high voltage is a very emerging area, जिसका आप देखोगे तो realization is 30 lakhs per kilometer, and it is very basic कि कोई बहुत ही specialized हाई वोल्टेज जो कैरी कर रही है केबल, उसका रियलाइजेशन ज्यादा होगा वर्सेस लो वोल्टेज कोई कैरी कर रहा है, उसका रियलाइजेशन कम होगा. एंड it will actually translate to your EBITDA margins for a lot of listed companies. So for example, if you look at margins for dynamic or universal cable or a power industries, you will be able to understand कि वो किस वोल्टेज की केबल्स बना रही है और उनका क्या रियलाइजेशन पर किलोमीटर है, क्या EBITDA margins है. But we will go into depth in those individual names in the next session. Currently our focus is just to understand the macro side of it, and once we understand macro, understanding micro will be, I think, very easy, hopefully. Again, differentiating between conductors and cables, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, there is a ACSR conductor and a HTLS conductor, which is high tension low sag. इन कंडक्टर्स के ऊपर कोई केबल्स, कोई पीवीसी या एक्सएलपी की कोटिंग नहीं होती है. सो दे आर बेयर मेटल्स, एल्यूमिनियम इन मोस्ट केसेस, एंड दे हैव नो इंसुलेशन. वर्सेस केबल्स में इंसुलेशन डालना जरूरी है, because cables are used more near people versus conductors are actually used in very far off areas. Usage of a conductor is typically transmission, when you want to travel, make the electricity travel from large distances, from, let's say, Gujarat to West Bengal, as I told you. But on the other side, cables are normally used in distribution side. Some cables are also used in transmission, but that is probably the last step of transmission, जहां पे cables use होती हैं. ज्यादातर कंडक्टर्स हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होते हैं, बट केबल्स आर ऑफ ऑल टाइप्स, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज, हर तरह की केबल होती है. केबल में इंसुलेशन होता है, कंडक्टर्स में नहीं होता है. एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, but these are all basic in nature. I hope I'll anyway kind of call them out. In terms of mechanical protection, cables do have some kind of shield because they have XLP or PVC coating, but conductors don't have, and hence they are normally placed at very high altitude or very high height versus ground, ताकि कोई mechanical touch नहीं हो जाए वहां पे. कोई bus, truck, a high vehicle should not be able to touch them because they are literally lines of high voltage currents, which can really mess up things. Again, on the installation side, it is slightly counterintuitive, but क्योंकि कंडक्टर एक बहुत बड़े लैंड एरिया में और बहुत difference between two towers can be very huge, the cost of installation of a conductor is very low versus the cost of installation of a power cable.
मेंटेनेंस, अगेन कंडक्टर्स, क्योंकि वो बेयर मेटल्स होते हैं, उनमें मेंटेनेंस आता है, कभी कभी बर्ड्स उस पर टच हो जाती है, फॉल्ट्स हो जाते हैं, बट इन ए केबल विच इज फेयरली इंसुलेटेड वहां पे वो दिक्कत नहीं आती है. यूज केसेस, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. appearances, I think you can always some key companies which are in conductors में ज्यादा कंपनी है नहीं. Only apar, Sterlite, Diamond Power, which in many ways is now a Adani company, uh, versus cables mein there are many companies. uh, Almost, you would find 10 to 15 companies who are listed, but these are some of the large cable companies. KEI, Polycab, Apar also manufactures cables. Universal Cable, which is an interesting company, and RR Cable. I think moving on to the next interesting part of this is really wanted to discuss another theme which is emerging, is called HVDC. It's called high voltage direct current. तो अभी आप देखेंगे तो bulk of the transmission is happening on AC, which is alternative current. But there are benefits of shifting to DC, high voltage direct currents, क्योंकि इसमें आपकी कॉस्टिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस कम हो जाती है. एंड दैट इज व्हाट वी हैव शोन इन द ग्राफ, दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, DC cables, or using high voltage direct current cables is much cost effective versus using a AC cable. I believe that minimum distance is more than 200 or 250 kilometers. So if you are laying like a really long, transmission line, you will probably have to use HVDC, which will make sense on the costing side. This is a very emerging technology. India में आज तक I think there are a handful of projects which are already gotten installed. I think maybe two or three projects. But Indian government has announced more than 5-10 projects, and mind you, one single HVDC project is costing the government of India more than 25,000 crore rupees. And doing 8 to 10 project will cost almost 2.5 lakh crore. And bulk of this expenditure from the government side will actually transmission to a lot of these companies who are manufacturing products to cater to HVDC. And there are very few companies, not just in India, worldwide, who are catering to HVDC related components. तो एक छोटा सा यहाँ पे ट्रांसमिशन एग्जांपल भी लिया है on the right hand side, which is wind power is getting generated, which is then going to AC transmission line. Then there is a substation which converts AC to DC, and there is a long distance HVDC transmission line which again goes to DC to AC conversion, and then that AC to DC conversion is getting transmitted to distribution lines and finally going to the end customer. So as I told you, Khavda is one of the major places from where these HVDC projects are getting planned, and we actually have an entire list of HVDC projects. We will delve into this much deeper in the next week's presentation, which will be more micro. And since this is a macro based presentation, and I want to limit this discussion, I will only say that HVDC related companies जो हैं वो बहुत कम है, और HVDC रिलेटेड जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत ज्यादा है. इस वजह से उन कंपनीज को डिसप्रपोर्शनेट ऑर्डर बुक मिलेगी, एंड दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इन वैल्यूएशंस ऑफ दोज HVDC रिलेटेड कंपनीज. अगर आप देखेंगे लिस्टेड स्पेस में वेरी हैंडफुल ऑफ कंपनीज आर करेंटली केटरिंग. One of the companies is called Quality Power, which is catering to this HVDC, theme or products related to HVDC. Another company I can think of is called Universal Cables, which manufactures HVDC related cables. 2027 के बाद मेनली गवर्नमेंट का फोकस HVDC cables, HVDC installations पे ज्यादा होगा, and these companies might see disproportionate order books coming from HVDC. But apart from these two companies, it is majorly Hitachi, Siemens, and GE Vernovas of the world who cater to this very special subsector of the power T&D sector.
but we'll discuss. And again, as a disclaimer, none of these names should be construed as investment advice. Zyadatar, these names also trade at a very high valuation in terms of PE and EV bidda. So please consider all of this only for education and knowledge purposes. Please do not take any investing decision, because we are not responsible for any profits or losses which you might see. And hence, just go ahead giving a disclaimer so that people don't get too excited about a lot of these companies. Ankur, I can repeat. One company is Quality Power, the other company is called Universal Cable. इनका HVDC में कुछ exposure है, but as of now, the order book is not large. It may get large in the next 2-3 years. अभी ये बहुत छोटी companies है, and it's a very high, uh, high PE traded stock. So I would not recommend that to anyone. Anyways, I think moving on to some other again, I told you HVDC जहां पे भी आएगा, जहां पे पावर को आप डायरेक्ट करंट में ट्रांसफर करोगे, वहां पे फैक्ट्स आएगा. फैक्ट्स इज फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव करंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स. ये भी बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हैं. इनका भी काम इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको पावर को एसी से डीसी और फिर डीसी से एसी करना है. इनमें भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड एसवीसी and STATCOM. These equipments are basically some equipments which are powered by semiconductors, which will, quickly respond to conversion of this electricity from AC to DC. ये भी बहुत नीच प्रोडक्ट्स हैं, एंड सिमिलर टू HVDC, इनको भी मैन्युफैक्चर करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं. और सिमिलर टू HVDC, इनकी भी डिमांड अभी बहुत आना बाकी है. एंड वंस वी रीच ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन, यू विल अंडरस्टैंड कि इनकी कितनी डिमांड आएगी. तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई सम ऑफ द स्टॉक्स have been trading at insane valuations, specifically जो ये बिग थ्री हैं, जी वर्नोवा, हिटाची एंड सीमेंस, इनको इतना ज्यादा वैल्यूएशन मार्केट क्यों देता है, ये आपको थोड़ा सा नेक्स्ट और सेक्शन ऑफ द पीपीटी में समझ में आएगा, एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीक्स प्रेजेंटेशन. So I hope this is clear. This entire section was around analyzing the value chain. As I told you, mainly तीन ही चीजें हैं: टावर्स, सबस्टेशंस एंड केबल कंडक्टर्स. सबसे ज्यादा खर्चा सबस्टेशंस में होता है, उसके बाद टावर्स, एंड उन टावर्स के ऊपर केबल्स एंड कंडक्टर्स लगते हैं. तो मेनली यही है. सबस्टेशंस में बहुत सारे इक्विपमेंट्स काम आते हैं, और काफी सारे इक्विपमेंट्स काफी नीश और ज्यादा लोग बनाते नहीं है, इसलिए अभी उनकी डिमांड सप्लाई में थोड़ा मिसमैच है. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई करने वाले लोग नहीं है. सो दैट इज व्हाई those companies have re-rated, but we are yet to see a lot of fundamental numbers which will only be seen in the next 2 to 3 years. So this is a very basic level understanding of the value chain. I hope this is clear. Please let me know by a thumbs up if this is clear, and then we can move on to the next, which is probably the later half of the presentation. So what is the core difference between HVDC and FACTS? See, HVDC एक overall theme है. High voltage direct current is the, let's say, ये पूरा घर है. It's the entire home, and FACTS is just maybe kitchen of that home, right? Sorry, FACTS is kitchen of that home. So FACTS is a subset of HVDC. HVDC is a very broad term, जहां पे a lot of things will come. Conductors, cables will come, but FACTS devices will also come. So FACTS is a part of HVDC, and HVDC obviously is a part of the overall TND theme. FACTS कंपनीज ज्यादा नहीं है. ज्यादातर ये जो तीन कंपनीज हैं, सीमेंस, हिटाची एंड जी वर्नोवा,
ये 3 कंपनीज ही फैक्ट्स बनाती हैं, फैक्ट डिवाइसेस बनाती हैं. आई थिंक क्वालिटी पावर भी कुछ फैक्ट्स के डिवाइसेस बनाता है, बट दैट इज लार्जली द ओनली कंपनीज विच हैव some devices for facts. PDF, I'll check this. I think we should be able to give the PDF, but I'll have to check this. I'm sorry, we are not here for company names. I'm really sorry. I really want to make you understand the fundamentals first. Companies will obviously come in the next week's presentation. So we will refrain actually from discussing company names. And this is obviously, education platform, education initiative by InVed. Uh, but obviously in the next week's presentation, which will be more company specific presentation, we'll be discussing that. Fact devices are used for voltage profile improvement to minimize the losses. You're exactly right. This is one of the use cases of fact devices. There are many use cases, but yeah, largely not just voltage, there are a lot of other things also. Uh, but I think you are near to what the actual situation is. So Um I'll move on to the main part of the presentation. And if you are able to understand this part, then you will understand why markets were so bullish about the entire sector. And maybe in the next week's presentation, we will also discuss why markets have become slightly bearish very recently. If you'll see, Trill is almost half from its peak levels. You take any TND company, they are down 20 to 30%. So we'll also understand that. But largely, if you understand कि ये सब खर्चा गवर्नमेंट कितना करने वाली है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि खर्चा इतना है तो ये खर्चा तो कंपनीज को एज अ प्रॉफिट मिलेगा, एज अ रेवेन्यू मिलेगा. सो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है और कहाँ करने वाली है. So this is the next, the crux of this presentation, and I'm glad to tell you that very few people on the street have been able to decode this really, क्योंकि this is actually, I'm talking about this NEP plan. So this is a 550 pager report from the government of India, and effectively very few investors will be able to read this, but it is not more than 25 to 30 pages of real investing wisdom. मतलब अगर आपको इन्वेस्टिंग के पर्पज से अगर आप देखोगे, तो देर आर नॉट मोर देन 20 पेजेस इन दिस 500 पेजर बुकलेट जो काम के होंगे. एंड वो 20 पेजेस को ही हमने रिफाइन करके इस पीपीटी में we have tried to present it. But just before all of this, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान है. ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का खर्चा कर रही है गवर्नमेंट फ्रॉम 2025 टू 20 फ्रॉम 2023 और 24 टू 2032, which is almost a 8-year time frame. And that is actually much higher than 9 lakh crore. 9 lakh crore is just the transmission capex which the government is doing. एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत बड़ा केपेक्स हो रही है, ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख करोड़ का खर्चा है. बट उस सब के पहले अगर आप 2016 में जाएंगे, जब द न्यू गवर्नमेंट केम इन, they were trying to understand a lot of things. They were trying to implement a lot of new reforms in the country, and every new reform on a country level takes a lot of time. टीएनडी स्पेस की हालत बहुत खराब थी. टीएनडी was one of the most uninvestable sectors in 2016, and this is from the investor deck of Alstom, which is now GE Vernova. Alstom करके कंपनी थी जो GE Vernova ने खरीद ली, and they renamed the company. But basically GE Vernova की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आप जाओगे और 2016 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखोगे, तो आपको ये मिलेगा कि देयर इज अ वेरी sluggish demand. There is no private capex happening. Government capex is also very delayed. Government is coming out with a bailout plan of discoms, which is called Uday scheme.
Korean and Chinese companies were taking market share. They were selling their products at losses via aggressive pricing, और इसलिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कभी ऊपर आ ही नहीं पाई. 2016 में बहुत बुरा हाल था. The last statement sums it up, where the T&D market has degrown. The degrowth has continued for the fourth consecutive years. So 2012 से 2016-17 तक T&D space actually was a negative growth space, and suddenly things change after COVID. So ऐसा क्या हुआ कि this is just a kind of a wake up call for everyone that 2016 में the space was not that great, but things changed due to government's initiatives and government's realization of the fact that this industry is a very important industry for India's growth, right? uh, Imagine some European countries like Spain, Portugal, which saw electricity breakdowns. Any new industrialist or any new MNC companies will not set up shop in your country if there is a consistent power outage, right? कोई प्राइवेट केपेक्स करेगा ही नहीं जब उसको पता है मैं केपेक्स करके उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा, मेरी लेबर काम ही नहीं करेगी. मैं जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर ही नहीं होंगे क्योंकि बिजली नहीं आएगी. So this is one of the most fundamental requirements for growth of a country, right? And the government actually addressed this head on. And kudos to the current government. I think जो भी recently, you obviously have seen a lot of share price movement, but fundamentally जो country में जो changes आए हैं, a large part of the benefit actually goes to the current government, because 2016 things were not looking great. Now moving on to the actual government data, which is from October 2024. You can just Google this up. You'll find this, or otherwise we are happy to also share the link to this report. So इस report में काफी there are some sections जिनके screenshot हमने यहाँ पे लिए हैं हमारी report में. तो आप ये देखेंगे कि 2021 गवर्नमेंट ने पूरा प्लान लेआउट करा है कि हम ट्रांसमिशन लाइंस में, सब स्टेशन में, एचवीडीसी में हम कितना कितना किलोमीटर या कितना कितना एमवीए, सब स्टेशन आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, राइट? सो एमवीए, कितना एमवीए या किलोमीटर्स का इंस्टॉलेशन करेंगे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ट ऑन द राइट हैंड साइड. तो गवर्नमेंट ने 2020, 21, 22 से 2026, 27 तक का एक रोड मैप दिया है जिसमें अभी हम आज हैं. वी आर इन दिस टाइम ड्यूरेशन ऑफ 22 to 27. इस टाइम ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम 4.5 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे. एंड आउट ऑफ दिस 4.25 लाख करोड़ ऑफ एक्सपेंडिचर, if you see bulk of the growth or bulk of the expenditure, although it is pretty evenly spread out, but agar if you really calculate the CAGR, you will see that bulk of the expenditure or growth is actually happening in transmission lines which are 765 kV, जो ये रेड में आप देख पा रहे हैं सर्किल, या फिर सबस्टेशंस. तो आप देखेंगे इनकी ग्रोथ वर्सेस लेट्स से लाइकली जो एडिशन है वो 36,000 का है, बट इस एडिशन के पहले 51,000 का टोटल किलोमीटर था हमारे पास 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस का, विच मीन्स रफली 70% of the capacity is getting added in these 5 years, which is a huge jump, right? 2022 में हम 100 पे थे, 2026 में हम 170 पे होंगे. So which is a huge jump by any measure. And similarly अगर आप 765 kV के substations देखेंगे, although वो सर्किल रेड में नहीं है, बट अगर आप वो देखेंगे तो 2021-22 में हम अराउंड 2.5 लाख MVA पे थे, हम 3.5 लाख MVA और ऐड कर रहे हैं इन 5 सालों में, which is more than 100% growth, which is almost like a 150% growth rate in these 5 years versus the entire history of India, which is 70 years, right? Whatever. So, जो entire history में नहीं हुआ, वो इन 5 सालों में हो रहा है. So, it's a big capex. And if you very closely watch the additions which have happened in this time period, the additions have
समवॉट बीन लेगार्ड, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये जो बॉटम राइट पे आप जो देख रहे हैं, दिस इज क्रिएटेड बाय अस, तो इसमें जो ट्रांसमिशन लाइंस का जो खर्चा करने का प्लान था इन 5 सालों में वर्सेस एक्चुअल खर्चा कितना हुआ इन 3 सालों में, क्योंकि अभी तक 3 साल गए हैं इन 5 में से, तो आप देखेंगे बल्क ऑफ द एक्सपेंडिचर विल हैपन इन द नेक्स्ट 2 years इन द पावर टी एन डी। जो भी आपका खर्चा है 4,25,000 करोड़ का, इसका ट्रांसमिशन लाइंस का अराउंड 65 to 70% खर्चा अब 2 साल में होना है। सबस्टेशंस का अगेन अराउंड 70% खर्चा इन 2 सालों में होना है, जो अभी पिछले 3 सालों में हुआ। जो पिछले पूरे 5 साल का खर्चा है उसका 70% विल हैपन इन 26 and 27। So this is how you derive government plans from their own publications. Now इस पे हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पूरा अचीव हो पाएगा कि नहीं, शायद ये अचीव नहीं हो पाएगा, शायद 80% ही अचीव हो पाएगा या 70% ही अचीव हो पाएगा। बट गवर्नमेंट का इंटेंशन काफी क्लियर है कि बल्क ऑफ द हेवी लिफ्टिंग हैज टू हैपन in FY26 and FY27. This is what our takeaway is, from this government related data. I hope, yeah, we will come to projections for the next 5 years. I think that is the next slide. So I hope this is clear to everyone that bulk of the expenditure is actually planned for the next 2 years. I'm not saying that this will actually transpire. This might not. We might still see some problems क्योंकि in a country like India there are always some problems. कभी कभी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए लैंड नहीं मिलती है, ROW इश्यूज बोलते हैं जिसको, राइट ऑफ वे इश्यूज। कभी कभी इक्विपमेंट सप्लायर टाइम पे इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करता है, देर इज डिले ऑन EPC's एंड ऑल्सो। सो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट अगेन चैलेंजेस होने के बाद भी ये जो ग्रोथ है पावर T&D स्पेस में, ये अभी चलने वाली है। और ये अभी नेक्स्ट स्लाइड से और आपको समझ में आएगा कि कैसे चलने वाली है, क्योंकि फॉर द नेक्स्ट 5 years फ्रॉम FY27 to FY32 गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि NEP डेटा की जो रिपोर्ट है, उसमें अराउंड 5 लाख करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट और करेगी on the same transmission line, substations and HVDC. And the chart on the right hand side आप देख पाओगे कि HVDC will become a big portion of the growth. तो अगर आप जो सर्किल है रेड में उसको अगर आप देख पा रहे हो तो उसमें देखोगे कि HVDC which was before 22 which was 19,000 kilometers in FY20 27 to 32 we will be actually adding 15,000, so it will be almost 70-80% addition of what of the total HVDC transmission lines which we had. Similarly agar aap नीचे भी HVDC is kind of getting explained, bipole link capacity, which is a technical term but basically आप ये समझोगे कितनी मेगावाट्स का इंस्टॉलेशन होगा। इंडिया में 2027 तक 31,500 मेगावाट्स का इंस्टॉलेशन था HVDC का, जो कि 2027 से 2032 तक 32,000 MV मेगावाट्स का इंस्टॉलेशन होगा, विच इज ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ, राइट। सो उन 5 सालों में HVDC का बहुत बड़ा काम होगा। दैट इज व्हाई आई सेड अर्लियर कि HVDC is a theme which will only play out in the next 2, 3, 4 years. I hope this is clear. This was, one of the crux. This was one of the crux of this presentation, to look at really the government data which drives all this expenditure in power T&D space. I think we can move on. I've told the next 5 years also. Now इस सब डेटा को हमने एक्सेल में डाला and we have arrived at our own numbers. What is the CAGR return, or let's say CAGR growth, which the government itself is forecasting? And आप देखोगे तो सबसे ज्यादा CAGR और सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको 765 kV HVDC ट्रांसमिशन लाइंस में दिख रही है। सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ
or not second, actually slightly more higher growth is actually in 765 kV substations and 400 kV substations. तो मैं एक्चुअली आई दिस वांट टू आस्क दिस टू पीपल इन जनरल कि आपका टेक अवे क्या होगा एज इन्वेस्टर्स अगर आपको ये कोई बोले कि हायर केवी में ग्रोथ ज्यादा है वर्सेस लोअर केवी में ग्रोथ कम है, तो व्हाट विल बी योर टेक अवे to invest in this sector? Just a random question before I move on to the analysis part also. Any comments from anyone? My question is, what as an investor will be your takeaway from this? As information, I can tell you that the highest growth is happening in higher kV substations, higher kV transmission lines, higher kV. The bulk of the growth is happening in higher kV. So what is your find companies who are operating in higher kV, right? Look for opportunities and look for companies which are operating in higher kVs, क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से ज्यादा ग्रोथ हायर केवी में आने वाली है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट अशोक, Zishan, Vijay, Arpit. Absolutely. I think that is the main takeaway from this government data, that bulk of the growth is actually coming in higher KV only. So now अब आप पूरी listed space में आप देखोगे तो listed space इतना ज्यादा efficient है कि आप देखोगे पी मल्टीपल्स, ईवी बिड्डा मल्टीपल्स, एंट्री वैल्यूएशन हायर केवी के ही ज्यादा है. जो हायर केवी की कंपनीज है जैसे या अपार इज इनटू हायर केवी, एब्सोल्युटली. तो आप अपार का पी मल्टीपल देखो वर्सेस सम ऑफ द अदर केबल मैन्युफैक्चरर्स, यू विल ऑलवेज फाइंड apart from some special situations like let's say Diamond Power, Marsons, some other companies, नॉर्मली स्पीकिंग जो कंपनीज के प्रोडक्ट्स हायर केवी को केटर करते हैं दे आर हैविंग अ हायर वैल्यूएशन वर्सेस जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स लोअर केवी को केटर करते हैं. दिस इज अ जर्नल ट्रेंड विच आई हैव सीन, बट वी विल डिस्कस दिस अगेन ऑन नेक्स्ट वीक्स प्रेजेंटेशन. फॉर नाउ आई होप यू आर एबल टू टेक अवे दिस फैक्ट कि यस अभी ट्रिल इज इन हायर केवी. यस, ट्रिल इज इन हायर केवी. There's another company called Atlanta, which is also in higher KV. We'll discuss those companies individually in the next week's session. So I hope this was like clear to everyone. This is actually the crux of investing in this sector. Look for companies which are in higher KV. एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताता हूँ आपको कि ये तो डिमांड सिचुएशन है कि डिमांड हायर केवी की ज्यादा है, बट सप्लाई सिचुएशन में आपको ये बताता हूं, दिस इज समथिंग विच विल बी प्रोबेबली न्यू टू अ लॉट ऑफ यू, बट सप्लाई हायर केवी की कम है क्योंकि हायर केवी की कभी डिमांड ही नहीं आई. पास्ट में 2016 का आप वो रिलीज देखोगे, कभी डिमांड ही नहीं थी इस सेक्टर में. लोअर केवी में सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोअर केवी कमोडिटी प्रोडक्ट्स है वर्सेस हायर केवी को बनाने वाले लोग ही बहुत कम है. हायर केवी ट्रांसफार्मर बनाने वाले आप ट्रांसफार्मर की 10 कंपनीज लिस्टेड है और आई थिंक 5 to 10 कंपनीज आर अनलिस्टेड. There are handful of companies which are able to manufacture higher kV transformers. Similar goes for cables, similar goes for equipments, right? There are very limited supply in higher kV versus in lower kV there is bulk of supply. बहुत सारे लोग हैं जो लोअर केवी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, सप्लाई बहुत सारी है, सब लोग केपेक्स कर रहे हैं और बाद में सप्लाई विल कैच अप टू डिमांड. बट हायर केवी में थोड़ा सा टेक इन्वॉल्व होता है, and hence there is some moat around higher kV manufacturing. We will discuss all of this in next week's presentation. Coming to again the capex which the government is doing, and this is we have taken from Power Grid's 4Q FY25 con call. Power Grid के जो head है RK त्यागी जी, he had specifically said and mentioned this NEP report जो हमने अभी पूरी डिस्कस करी है, जो गवर्नमेंट डेटा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान.
तो इन्होंने यही बोला है कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के हिसाब से 2032 तक 9 लाख करोड़ का खर्चा है. 9 lakh crore is the planned expenditure. Out of the 9 lakh crore, only 3 lakh crore has been already, projects have been already allocated. मतलब इनकी ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे. 6 लाख करोड़ के ऑर्डर्स तो अभी तक मिले भी नहीं है. एंड दिस इज ऑलमोस्ट 6 month old डेटा, क्योंकि वी आर नाउ इन Q2 ऑफ FY26. तो ये 6 महीने पहले की सिचुएशन है, बट आई एम श्योर ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा. तो 6 लाख करोड़ का जो खर्चा है वो अभी आना बाकी है. बट अगर मैं एक और इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताऊं कि ये 3 लाख करोड़ में से भी, ये जो 3 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट दे चुकी है एज ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन अभी 1 लाख करोड़ का ही हुआ है. So this is again from PPT of Power Grid and Adani, and you will see that Power Grid has still got almost 1.5 lakh crore of order book out of that 3 lakh crore. Adani has almost a 50,000 crore order book. So इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 2 लाख करोड़ का खर्चा तो अभी इनकी ऑर्डर बुक में है. Out of the 3 lakh crore which is allocated, 2 lakh crore is already in the order book, which means it is yet to be executed. And hence, out of the 9 lakh crore expenditure which the government is planning, only 1 lakh crore is actually come onto ground until FY25. Now, obviously, 6 months have passed, and there'll be more incremental expenditure. But when people tell me that power T&D का time खत्म हो गया है, या uh, you know uh, ये सेक्टर अभी 6 महीने से इज नॉट डूइंग वेल, मार्केट्स हैव करेक्टेड, कंपनीज हैव करेक्टेड, आई टेल देम दिस डेटा कि यार 9 लाख करोड़ में से एक्चुअल में 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ का तो अभी खर्चा होना बाकी है. वो बात अलग है कि अब एंट्री वैल्यूएशंस वो नहीं है जो FY25 में थे. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्शंस, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है नंबर्स, उसके उसके टर्म्स में अभी सेक्टर स्टार्ट हुआ है एक्चुअली में. दीज आर सम ऑफ द ऑर्डर बुक्स. आप देख सकते हो कि पावर ग्रिड, अदानी, हिटाची, जी वर्नोवा, ट्रिल, इनकी ऑर्डर बुक कैसे एक्सपेंड हुई है इन द लास्ट 3 years. एंड देयर हैज बीन अ क्रेजी कैगर expansion of order book. No one is below like 60-70% CAGR ऑर्डर बुक इंक्रीज. तो ये जो 70-80% की ऑर्डर बुक इंक्रीज है, आई थिंक 80-90% जैसे फिगर्स तो आना मुश्किल है. बट ऑन अ स्टेडी स्टेट अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर में खर्चा करेगी तो you can easily see a order book in going forward of let's say 25-30% increase of order book in the next 4-5 years, जो कि it is visible in government's own data, which is the NEP report. एक फन फैक्ट एक और है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि यू कैन ट्रैक दिस डेटा मंथली. एंड आई ऑल्सो शेयर्ड अ लिंक and happy to share this on the group as well. But गवर्नमेंट ये मंथली डेटा रिपोर्ट करती है कि हमने 765 kV, 400 kV, 220 kV में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर ने कितना कितना खर्चा किया और हमारा क्या टारगेट था. मतलब इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी I cannot demand in a sector where on a monthly basis you can actually track what the government had planned and what is the achievement. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि टारगेट क्या था और अचीवमेंट क्या हुआ. और अगर अचीवमेंट इज गोइंग लैगार्ड, एक्चुअली मेजर अचीवमेंट H2 में होता है. तो दीज आर ऑल H2 हैवी बिजनेसेस. बट आप देखोगे कि यू कैन इजीली ट्रैक दिस एंड दिस इज पब्लिक डेटा आउट देयर. Up coming on to FY26 specifically, and this is again a slightly dated analysis, but as per this analysis, FY26 is likely to see in terms of transmission lines almost a 3x increase in installations of transmission lines and almost a 2x increase in the installations of substations if you compare it with FY25. ऑब्वियसली H1 तक ये खर्चा अभी तक नहीं हुआ है. H1 तक EPC कंपनीज हैव डन वेल,
but substation या transformer companies due to various supply chain issues have not done that well. But government के plan के हिसाब से H2 is looking really good. Uh, and again, please do not take this as an investment advice. This is obviously an education platform जहाँ पे ये फंडामेंटल जो गवर्नमेंट के नंबर्स हैं इसको हम ये बता रहे हैं आपको या सिखा रहे हैं कि these numbers will actually transpire into some of the numbers which these companies will report. And the government themselves are saying that transmission lines installation will be almost 3x of FY25 and substations will be almost 2x of FY25. And hence उस तरह की growth इस पूरे sector को दिख सकती है. If not 3x, it can be 1.5x, which is still a 50% growth, which is a handsome growth by any standard. Again, this is coming back to HVDC again. Um, there is a lot of focus. There is a lot of government expenditure. On the right hand side, you are able to see the government reports data on HVDC. On the left hand side, there are some screenshots from some DRHPs and some credit rating agencies. I would take a lot of this credit rating agencies data with some pinch of salt, because a lot of these platforms are paid platforms. But I would take government data at least with some credibility. But anyways, HVDC is likely to see a very high growth, maybe 2 to 3 years from now, if not currently. मतलब जो भी अभी खर्चा होगा HVDC का वो FY27 के बाद दिखेगा, and we are currently in FY26. So abhi there's still 1.5 to 2 years out there before the HVDC pipeline source. Now, when we talk about the entire TAM or total addressable market of 9 lakh crore, जो ये NEP डेटा में लिखा है, इस NEP डेटा में भी बहुत कुछ नहीं लिखा है. इसमें क्या क्या कवर नहीं होता है ये हमें देखना पड़ेगा. सो इसमें वो कवर नहीं होता है जो ट्रांसमिशन बिलो 220 केवी के नीचे जो गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है. सो जो 220 केवी एंड अबव खर्चा होने वाला है वो एनईपी डेटा में है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन का पार्ट है. बट ऐसा भी बहुत कुछ है जो ट्रांसमिशन का पार्ट है और 220 केवी के नीचे है. और फिर बहुत बहुत कुछ ऐसा भी है जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, पर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट में कवर ही नहीं करा है. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देयर इज अ सेपरेट स्कीम कॉल्ड आरडीएसएस स्कीम, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक स्कीम है. तो वहां पे अलग 3 लाख करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट बोल रही है. प्लस एकदम इम्प्रॉम्प्टो हमारे पावर मिनिस्टर आके टीवी पे बोल देते हैं, न्यूज चैनल में आके बोल देते हैं कि हम एचवी और अल्ट्रा हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हैं, और हम अराउंड 1100 केवी लाइंस लगा रहे हैं. 1100 was not even thought of by anyone. मतलब 1100 is probably more than HVDC in terms of the capacity of carrying electricity. I think these all, I mean, this alone 9 projects will be costing more than 50,000 to a 1 lakh crore kind of number. So बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं, प्राइवेट केपेक्स जैसे डेटा सेंटर कोई लगा रहा है. गूगल ने अनाउंस किया कि आंध्र प्रदेश में दे आर पुटिंग अप अ कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट. That will require a lot of T&D expenditure, right? So private participation जो है या private capex जो है वो इस 9 लाख करोड़ का हिस्सा ही नहीं है. So this is not a part of the 9 lakh crore expenditure, and hence the overall TAM or overall total addressable size of the market is far higher. It is maybe 1.2 times, 1.5 to 2 times of 9 lakh crores. So a lot of this expenditure is not a part of the 9 lakh crore TAM, which is what we want to, as shown, RDSS is not a part of 9 lakh crore. This itself is as you can see on the screen, the scheme outlay is 3 lakh crore for 5 years, and then RDSS 2 scheme will come from FY27. And again, this is a news article that India will supply power to Saudi Arabia, and this will happen through undersea or subsea EHV lines, or let's say power transmission lines, which will be सी बेड के नीचे ये लोग ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे और सऊदी अरेबिया को देंगे. वैसे ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया विच इज अ एनर्जी एक्सपोर्टर
which country will actually acquire power from India, which is considered, a developing nation, or energy importer in general, because most of our energy is imported. But this is a superb development कि energy deficit country, or let's say Saudi say this can be also like a barter deal, but this is all speculation. But this is a very good news for a country like India, where country is spending 90,000 crore rupees, which will also get added to the overall TAM, right? There are a lot of cable companies who manufacture undersea power cables. They will see a lot of government demand due to this project. So this was all around government data. This was, one of the most important parts of the PPT. But again, how to understand this government data, and इस गवर्नमेंट डेटा पे हम एक्शन क्या ले सकते हैं, ये कैसे बात करें कि चलो ठीक है यार, मैंने तो ये समझ लिया कि 9 लाख करोड़ का खर्चा है, या 9 लाख प्लस 3 लाख करोड़, which is distribution, and there is some 2-3 lakh crore more, so around 14-15 lakh crore rupees will be the overall government expenditure on the sector. बट ये मुझे बताओ कि ट्रांसफॉर्मर्स में कितना खर्चा हो सकता है, या केबल्स में कितना खर्चा हो सकता है, या इस 9 लाख करोड़ को डिवाइड करो. So that is what we have done. The entire and this is from Power Grid. This is again, Power Grid is also referencing government NEP data. They are also saying 9 lakh crore. This 9 lakh is divided into two 5-year plans. First 5-year plan is 4,25,000 crore. The second 5-year plan is 4,90,000 crore. दोनों का ऐड करोगे तो around 9 lakh crore का खर्चा है, which the government is saying. But this is basically divided into all these subcategories as per this slide which we have tried to prepare. कि ये जो पूरा खर्चा है पावर टीएनडी का, ये अराउंड 30 से 35% खर्चा ट्रांसमिशन लाइंस पे होता है. और ट्रांसमिशन लाइंस मतलब टावर्स, कंडक्टर्स एंड अदर्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं. अराउंड 35 से 40% या 30 से 35% खर्चा, माय बैड, is happening on substations. If you remove HVDC, that number is higher for substations. But if you अगर HVDC को आप अलग से काउंट करते हो तो सिर्फ HVDC is 15%. And actually, from latest numbers, I am able to understand that HVDC number itself is almost double of what is there in this report. But HVDC should be around 15%, and there are some others which is again 20%. So ये broader analysis है. 9 लाख करोड़ का जो खर्चा है वो कहाँ कहाँ जाएगा. ट्रांसमिशन लाइन में, टावर कंडक्टर अदर्स में जाएगा, सब स्टेशन में, ट्रांसफॉर्मर्स में जाएगा. तो अगर आप इसको ब्रॉडली समझोगे फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव, एंड इसको पर एनम करके कैलकुलेट करोगे, एंड दिस इज सिंपल मैथ. थैंक यू सर. दिस इज सिंपल मैथ विच वी आर डूइंग हियर इज, यू नो अगर आप बस एक सिंपल सी मैथ्स करोगे to just understand and get a flavor, तो ट्रांसमिशन लाइंस में, स्पेसिफिकली टावर्स में, साल का 20,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है. साल का 20,000 करोड़ का टावर बिकेगा. सिमिलरली साल में अराउंड 12,500 करोड़ का कंडक्टर्स एंड केबल्स ओनली फॉर दिस पावर टीएनडी will sell. And on the right hand side you have players selling them. So आप इन सब प्लेयर्स के टॉप लाइन ऐड करो और देखो कि ये टैम बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा. बट हाँ, बीवेयर एंड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट ये प्लेयर सिर्फ टावर ही नहीं बना रहा है. केईसी कल्पतरू टावर बना भी रहा है, बट ईपीसी भी कर रहा है. सो सिर्फ अगर उसका टावर का देखोगे आप, ट्रांसरेल भी कर रहा है, स्किपर भी कर रहा है. सो ये लोग सिर्फ टावर का अगर आप देखोगे तो 20-30 हजार करोड़ साल का, 20 से 25 हजार करोड़ साल का टावर, कंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स इज अ बिग सब सेक्टर, राइट. ये साल का अराउंड 20,000 करोड़. एंड ऑब्वियसली not every year is 20,000 crore, understand this. Bulk of the expenditure might also happen after 27. So this year it might be 15,000 crore, and towards the later end of the cycle it can be 25,000 crore per year, is what I hope you are able to understand the cadence of this expenditure. It will not be uniform. This is just a broader level calculation of the TAM.
but this will not be a uniform number for each year. Every year will be 10, 20%, 25% here or there. But on an annualized, on an average basis, साल में इतना खर्चा HVDC, substations, transmission lines, and others में होने वाला है. And you have the players on the right hand side. If you do the math, if you keep your eyes and ears open, there can be significant opportunities which can come in the listed space for you to understand this entire space. And hence this is probably, after the government expenditure, this is probably one of the most important takeaways from this today's meetup, कि ये टाइम है, ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट है इन कैटेगरीज में. I hope this is clear, and I hope this is, insightful. Thank you, Anuj. Encouraged to, kind of see good comments out there. Thank you, Ashok. Thank you so much. So this is, I think, again, one of the most important takeaways from this PPT. I think moving on, ये एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी है हमने. This will again be discussed in detail in the next week's presentation. Thanks a lot. Thank you everyone for those comments. Thank you so much, everyone. Thanks. So I'll move on to the presentation. ये हमने ये समझाने की कोशिश करी है कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है. जो ये लंबे और बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ट्रांसमिशन के, जहां पे आपको HVDC भी करना है या आपको ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एंड you basically will do a lot of this expenditure. तो एक्चुअली में ये काम कैसे करेगा, मतलब गवर्नमेंट किसको काम करवाएगी, किसको काम देगी, और वो किससे काम कराएगा. तो ये इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है. इन कॉन्ट्रैक्ट्स को टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं, विच इज कॉल्ड TBCB. टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ये गवर्नमेंट पूरी ट्रांसमिशन लाइन बिछा रही है पूरे देश में. एंड ये TBCB एक तरह का आप समझ लो कि एक एसेट बन जाता है. तो खावड़ा से वेस्ट बंगाल की एक ट्रांसमिशन लाइन है, उस पर्टिकुलर लाइन का एक प्राइवेट एंटिटी को या एक गवर्नमेंट एंटिटी को भी ओनर बना देंगे, और उस ओनर को वो लाइन बनाने का काम दिया जाएगा, और उस लाइन से रिलेटेड केपेक्स वो एसेट ओनर करेगा. सो दिस इज सिमिलर टू, लेट्स से कोई सोलर पार्क बनाता है, तो कोई तो खर्चा करता है ना, जो उस एसेट का ओनर बनता है. जैसे एसेट ऐसे ही हो गया, जैसे अपने if you have a commercial real estate property or a home, that is your asset for you, right? उस एसेट के अलग अलग एडवांटेजेस या बेनिफिट्स होते हैं. तो इसी तरह से ये लोग एसेट बनाते हैं, और इस एसेट पे ये लोग कुछ एक फिक्स्ड टैरिफ, they will charge this fixed tariff. Cool ऋषि भाई. So they will charge this tariff to the government, and ये एसेट ओनर्स एक EPC कॉन्ट्रैक्ट दे देता है EPC कॉन्ट्रैक्टर्स को. ये कॉन्ट्रैक्टर्स फिर अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से, ट्रांसफार्मर कंपनी से, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स से, केबल कंडक्टर कंपनी से प्रोक्योर करते हैं और इंस्टॉल करते हैं और एसेट ओनर्स को बना के देते हैं. फिर फाइनली एसेट ओनर्स ऑन सम मेजर दे विल चार्ज अ रेंटल to either the government or discoms or final customers. So this is how the industry structure is. This is a very brief view of the transmission auction biddings जो हो रही है. You can see a clear uptick in transmission biddings in FY25 versus 24 and 23. आप देख पा रहे हो 23 के बाद जो रन अप हुआ है bids में. Again, this is a question related to TAM, so we will kind of skip this. Government, this is the RDSS allocation, which is around 3 lakh crore. This is state-wise, statewise division of this allocation. You'll see, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh are, top candidates where this expenditure is happening. This is, again, I think we can RDSS level completion status. RDSS की खुद की एक वेबसाइट है
जिसपे आप देख के उनके खर्चे को ट्रैक कर सकते हो, सिमिलर टू जो मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। तो ये सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, एंड अगर कोई इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ही शुड डेफिनेटली रिलाई ऑन गवर्नमेंट डेटा, क्योंकि एवरीथिंग इज गेटिंग रिपोर्टेड on the government side. I think we have discussed this. Extra high voltage, yeah, high voltage आप बोल लो, it's growing at the fastest way, and hence it is one of the key themes. इसको बनाना बहुत difficult होता है. We will obviously discuss about this in more detail, in greater detail in the next week's presentation, where we will actually discuss these companies who are producing these extra high voltage equipments or components or products. So just to conclude this presentation, there are broader three themes coming out as investable ideas in the entire power T&D sector. First is look for players who are working in higher kV. Second is look for players who are in HVDC, and similar to the first one, EHV, which is called extra high voltage. Look for players again which are in extra high voltage. I think that kind of concludes the presentation. Just to give you a rundown on what can be expected from next week's presentation is, we will cover all the subsectors within the T&D space, which is transformers, EPC, component manufacturers, and wire and cables. Although there are some more themes which are not written here, but we will try to cover that if possible in next week, or if not possible in next to next week, which is HVDC, these smart meter companies, and BESS, which is also emerging theme, battery energy storage systems. And I think with this, we would like to conclude this presentation.